Dear students, today we will discuss public expenditure and public debt. Now, public expenditure. Public expenditure is also called budget expenditure. In simple words, public expenditure is expenditure made by the government for the welfare of society as a whole. It means expenses made by central government, state governments, and other local bodies to satisfy the common wants of people, which they cannot satisfy individually. So, all expenditure done by the government on these amenities is called public expenditure or budget expenditure. Now, components of public expenditure or components of budget expenditure. There are two components of public expenditure. One is known as revenue expenditure and other is called capital expenditure. Now, what is revenue expenditure? Revenue expenditure is expenditure made by government on goods and services for making collective consumption. It is met out of tax and non-tax receipts. This revenue expenditure is met out of tax and non-tax receipts. That means revenue receipts. This is met out of revenue receipts. So revenue expenditure refers to estimated expenditure of the government in a fiscal year, which does not either create assets or cause reduction in liabilities. यानी न तो इससे कोई एसेट्स क्रिएट होते हैं न लाइबिलिटीज़ गवर्नमेंट की कम होती है. ऐसा है ये एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ देन देयर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. Capital expenditure is that expenditure which is made on capital accounts like projects, roads, railways. So expenditure of government in a fiscal year on these projects, roads, railway, etc. is called capital expenditure. So by this capital expenditure in a fiscal year, either this creates assets or causes reduction in liabilities of the government. So this capital expenditure either creates some assets or makes reduction in the liabilities of government. So this is what is meant by capital expenditure. Then there is public debt. So what is public debt? Public debt refers to loan raised by government. डेप्ट तो कर्जे को कहते हैं. जब गवर्नमेंट कोई कर्जा लेगी दैट इज नोन एज पब्लिक डेप्ट. सो पब्लिक डेप्ट रेफरेंस टू लोन रेज्ड बाय गवर्नमेंट विद इन द कंट्री और आउटसाइड कंट्री. चाहे कंट्री में लोन लें या आउटसाइड इंटरनेशनल लेवल पे कोई लोन लिया जाए, दैट इज नोन एज पब्लिक डेप्ट. एवरी गवर्नमेंट हैज़ टू बारो व्हेन इट्स टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स टोटल रेवेन्यू. जब बजट में टोटल एक्सपेंडिचर जो है टोटल रेवेन्यू से एक्सीड कर जाता है तो गवर्नमेंट को फिर कर्ज़ा लेना ही लेना पड़ता है. उसको मीट आउट करने के लिए, खर्चा पूरा करने के लिए फिर कर्ज़ा लेना पड़ता है. सो जैसे आपके घर में अगर आपकी आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है, कहीं ना कहीं से आपको कर्ज़ा लेके उसको बराबर करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है. सो सेम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट. So national debt is debt which a state owes to her subjects or nationals of other countries. तो इसलिए पब्लिक डेप्ट में एक चीज़ नेशनल डेप्ट की भी आई, यानी कौम पे जो कर्ज़ा होगा. तो कौम पे जो कर्ज़ा होगा या तो वो स्टेट्स जो हैं अपने लोगों से कर्ज़ा लेते हैं या अपने नेशनल्स से या नेशनल्स ऑफ अदर कंट्रीज़ से, यानी कभी आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से या कभी किसी और कंट्री से कर्जा लिया जाता है. दिस इज़ ऑल नोन एज पब्लिक डेब्ट. सो दिस वाज व्हाट इज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज़ पब्लिक डेब्ट. ओके.